आपने ट्रेन से ट्रैवल ज़रूर किया होगा। जब भी हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं हमारे पास एक टिकट होती है, एक सीट होती है एंड वी नो आवर फाइनल डेस्टिनेशन वेयर वी हैव टू रीच। But in the middle, sometimes there can be some delays, sometimes the tracks can get changed, sometimes there can be some other hurdles. In the same fashion, life is like a train journey. It's just that the ticket is your decisions and the driver is you yourself. इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता पाऊँ जिससे आपकी ये जर्नी स्मूथ जाए और आपको प्रॉब्लम्स का सामना थोड़ा कम करना पड़े। अगर हम लाइफ को एक ट्रेन जर्नी से कंपेयर करें, योर डिसीजंस आर योर टिकट। विच टिकट यू टेक फॉर द जर्नी विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। सिमिलरली तुम क्या डिसीजन लेते हो वो ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा डेस्टिनेशन एंड में क्या होने वाली है, तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजंस वेरी केयरफुली। बिकॉज एट द एंड दीज आर द डिसीजंस विच डिसाइड which direction your life is going to. In the same way, the train ticket decides where you are headed. मान लो तुमको ट्रेन से मुंबई जाना है तो तुम दिल्ली की टिकट नहीं खरीदोगे। Similarly, अगर तुमको in the future एक business start करना है, you're not going to join in dance class. That's the opposite. You need to be wary of buying the wrong tickets, that is taking the wrong decisions. You need to filter your decisions with 3 questions check. Whenever you have to take a decision which you feel is going to alter the course of your journey, ask yourself these 3 questions. Will this matter in 3 years? Does this align with my journey? Is this going to help me achieve contentment? If the answer to all 3 is yes, or at least 2 of them is yes, the decision is good. If the answer is something else, you should think through that decision again. जब तुम ट्रेन से ट्रैवल करते हो तुम सिर्फ डेस्टिनेशन बोर्ड्स नहीं देखते रहते। You sit back, relax, eat, enjoy the journey, enjoy the scenery, looking at the trees, skies, etc. We're not just fixated on the destination board. Similarly, life में तुमको ऐसे systems build करने चाहिए so that you're not just anxiously sitting there asking yourself, are we there yet? You should treat your morning ritual as your boarding routine. जिससे एक boarding check हमेशा compulsory होता है ट्रेन में चढ़ने से पहले। Make for yourself a morning routine that you religiously follow every day. This just helps add structure to your day और तुमको ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो एंड यू आर मोर प्रोडक्टिव दैट वे। जब तुम ट्रेन में होते हो तुम ऑब्वियसली बीच बीच में रूट मैप चेक करते हो कि तुम कहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे हो। सिमिलरली यू शुड डू अ वीकली चेक एवरी डे अबाउट वेयर यू आर इन योर लाइफ। एम आई ऑन द राइट पाथ? एम आई गोइंग टू सस्टेन ऑन दिस पाथ? एम आई एंजॉइंग माई सेल्फ? You should ask this weekly so that you can get off the train early and buy a ticket to a new train so that you reach the destination that you want to. मान लो अगर तुम ट्रेन में बैठ गए, मान लो तुमने ट्रेन की टिकट खरीदी, तुम बैठ गए और तुमको ट्रेन में बैठने के बाद रियलाइज हुआ कि तुमने गलत टिकट खरीद ली है, तो तुम क्या करोगे? जो डेस्टिनेशन 12 स्टेशन आ गया है, जो तुम्हारी डेस्टिनेशन जो तुमने ली है वो 12 स्टेशन आ गया है, तो तुम जाओगे वहाँ पे? नहीं, you'll get off at the nearest station. तो कभी तुमको अगर लाइफ में ऐसा लगे कि तुमने गलत डिसीजन ले लिया है, just stop at the nearest station. Stop as early as you can and buy a ticket to the station that you actually want to reach. जब भी तुम ट्रेन से ट्रैवल करते हो कुछ स्टेशंस पे ट्रेन थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रुकती है, कुछ स्टेशंस पे ट्रेन थोड़े कम टाइम के लिए रुकती है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपना स्टेशन पीछे छोड़ दो, you just leave your station behind. सिमिलरली लाइफ में ऐसा बहुत बार हो सकता है कि तुमको लगे दैट you've left a milestone behind, you've missed a milestone. At that time, what you should do is just treat it as a missed station rather than a failure. This shouldn't be the end of journey. After you miss your goals, just reroute. Just like a train changes tracks, in a train journey, your co-passengers can make or break your journey. अगर तुम्हारे आसपास अच्छे लोग बैठे हैं, सोशलेबल लोग बैठे हैं एंड यू हैव सम काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस विद देम, हैव सम गुड लाफ्स विद देम, यू एंजॉय योर ट्रेन जर्नी अ लॉट मोर. सिमिलरली लाइफ में अगर तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो कि तुमको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तुम उनके साथ जाके बकचोदी बेच सकते हो, देन यू आर गोइंग टू एंजॉय
journey a lot more. You should always choose your company that's headed in the similar direction or have the similar values. Okay, an actionable step for you: grab a pen and paper and audit to yourselves. Who are my co-passengers? Who are the people right now in my life that I spend the most time with? And are they holding me back? I hope you've done that, and I would recommend you do this every 6 months so that you're aware of who you're with. Reaching the station is not the end. It's about arriving with good memories, not burnout. As you keep growing with your goals, keep adjusting your journey. Keep adjusting your destination. Keep adjusting your destination as you grow. Like extending your ticket for a new place, etc. अगर आपको अपने लाइफ को ट्रैक पे रखने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, I'm building a journal right now. It's up for pre-sale. You're going to get access to it as soon as I finish it. You can buy it from the top link in the description. Thank you.